are compulsory. And besides these 2 courses, out of 4 elective courses, you have to opt for 3 elective courses. And after completing 5 courses, you will get a diploma degree. As far as the duration is concerned, you can complete this diploma program in 1 year. Maximum duration is 3 years. And course fee is 3,800 plus 300, which is registration fee. And minimum age for this program is 20 years, and maximum age it has no bar. As far as eligibility is concerned, all the applicants who have completed 10 plus 2 are eligible to apply for this course. And also anyone without 10 plus 2 but 20 years old and above who can also be admitted to this program. Now, being able to write is a key to building a strong personal brand, and creative writing ignites your imagination, creativity, and innovation. So therefore, by joining this program, get the right idea, learn the art of writing, and master the art of writing by joining this program. Anyone can become a writer, I think, and you can and you should. So therefore, please join this program and get all the training in writing skills and become a good writer. Thank you very much. Namaskar and a very warm welcome to all our viewers on today's weekly session on student support services. As you know that this session is organized every Tuesday from 3 to 4 p.m. From the studios of the Electronic Media Production Center of the Indira Gandhi National Open University. I am Hema Pant. I am presently with the Regional Services Division of Ignou. And joining me in today's program is my colleague, Dr. Moni Sahai, who's Assistant Regional Director at the Regional Center Delhi 1, which is one of the 4 regional centers of Ignou located in the Delhi NCR region. तो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि प्रति सप्ताह हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं जो कि विद्यार्थी सहायता सेवा के विभिन्न आयामों पर हमारी चर्चा रहती है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि इग्नू में हर वर्ष 2 सत्र में प्रवेश होता है, एक तो जनवरी साइकिल और एक जुलाई साइकिल में। तो अभी वर्तमान में हम लोग जुलाई 2023 के प्रवेश सत्र में हैं। और आरंभ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रवेश लेने की जो तिथि है, द डेट फॉर एडमिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी अप टिल 10th of August. And those who are aspiring to pursue higher education from Ignou, who wish to attain higher qualifications across a diverse range of disciplines, you have a chance now. You can take admission. The admission process is totally online, and the last date is 10th of August. So we urge you not to waste much time, but you can log on to the Ignou website and select your program of choice and take admission in Ignou programs. साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि जिन विद्यार्थियों को पुनः पंजीकरण कराना है, री रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, अपने प्रोग्राम्स में जिसमें उन्होंने गत वर्षों में प्रवेश लिया है, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने अभी द्वार खोले हैं। 10 अगस्त तक आप अपने कार्यक्रम में री रजिस्टर कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड
you can take admission in any of those programs or re-register as the case may be. So before we actually start off with the session today, I would just like to tell you that the program is structured in such a way that in the first half, we will be talking about what is Ignou and what it has to offer, what are the different kinds of programs, what are the processes basically, because it is important that as a distance learner, you should be well aware and well versed with the processes which the university follows, to give maximum support to its students through various modes and mechanisms and platforms, and you should be aware of that. So we'll try and briefly apprise you. Whatever time we have at our disposal, we'll try and inform you about the different aspects of learner support. And in the second half, which is another 30 minutes, we would like to tell you how you're going to study. What is it that makes Ignou unique? What are its unique characteristics? ऐसे वो क्या आयाम हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल जागरूक और जानकार होना चाहिए, जिससे कि आप सुचारू रूप से इग्नू में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और जो भी समयावधि है, whether it is 6 months, 1 year, 2 year, 3 year program, you should be able to complete it in the specified duration. So with me, my colleague, Dr. Moni Sahai, and she's very experienced and she's been handling students at the regional center. It's one of the very high enrollment regional center of the country. So she will be able to enlighten us and the viewers and the listeners about the various aspects of Ignou. So before I hand over the floor to her, and हम लोग एक चर्चा में रहेंगे, एक इंटरैक्टिव मोड में रहेंगे, और आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन्स पर जो भी नंबर टेलीफोन के आ रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, उन पर डायल करके आप हमारे से संपर्क साध सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन रिमूव योर डाउट्स इफ यू हैव एनी अबाउट pursuing programs from Ignou, or if it's about any of the program in which you are already enrolled in Ignou and for which you wish to have some clarification or further information, you can always contact us. We will be very happy to answer your questions and to be in touch with you. So we look forward to your calls and your questions, which we would try and answer to the best of your satisfaction. So before we start with this session, I would just like to apprise, which I'm sure all our viewers and listeners know, that Indira Gandhi National Open University is a central university established by an act of parliament in the year 1985. And in more than 3.5 decades of its journey, it has achieved many milestones, which have, and it has created a name in the global arena for itself. It's a mega university. And the basic, the underlying philosophy of the Open University is access, equity, quality, and affordability. And the testimony to its quality is the various accolades the university has earned on national, international platforms. And very recently, that is as recently as January 2021, the highest accreditation and assessment body of the university, that is National Assessment and Accreditation Council, has awarded Ignou with an A++ ranking. So that speaks volumes about the quality of the programs, the learner support, and various services which the university has to offer to its students. Now, as you all know, that we are basically ODL, that is open and distance learning. And also we have transitioned to the online or digital mode of learning. So when we say ODL mode, so we are basically, the university is operating at a 3-tier level, or we can say it's a 3-tier structure. त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें कि मुख्यालय इग्नू का, जो कि मैदानगढ़ी में स्थित है, जहां पर अभी हम सब लोग हैं, और यहां पर समस्त जो 21 विद्यापीठ हैं, the 21 schools of studies, and the various divisions are over here, like your registration division, your student evaluation division, material production division, planning division, the electronic media production center, the various other divisions of the university, and the schools are functional from the headquarters. At the second rung, we have the regional centers, Kshetriya Kendra. Oh, hello, we have a caller from MP Moni. Yes, hello. जी, हेलो, मैं साइबा बोल रही हूँ। हाँ जी, और मैं ये जानना
कि हमें जो MEC कोर्स दिया है उसका जो फर्स्ट ईयर, हेलो, हमने सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर दिया जुलाई 23, और इसमें क्या है कि असाइनमेंट का मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक मिलेगा और रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक हमारा फर्स्ट ईयर का। आप कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी। और आपने सेकंड ईयर में प्रवेश ले लिया है, आप ये कह रही हैं? जी हाँ। सेकंड ईयर में आपने प्रवेश लिया है जुलाई 22 में, जुलाई 23 में। जी। सो MEC में आपने अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट ईयर के? जी, फर्स्ट ईयर जो है प्रीवियस, हाँ जी, उसमें हमने अपने सारे पेपर दे दिए, असाइनमेंट भी दे दिए, रिजल्ट अवेटेड है। तो शी कैन सेंड एन ईमेल। आप एक हमारा जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन है उसको आप ईमेल कर सकते। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? भोपाल। हाँ, तो आप एक ईमेल में ये सारा ब्यौरा देते हुए एक ईमेल कर दीजिए रजिस्ट्रार SED स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, और कॉपी में आप रीजनल सेंटर भोपाल को रख सकते हैं, जिससे वो भी जानकारी में रहें कि क्या स्थिति है, एंड वी कैन ट्रेस इट अप। दैट इज द ओनली वे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सबके रिजल्ट आ गए कि अभी बचे हैं? नहीं, रिजल्ट्स तो अभी डिक्लेयर हो रहे हैं। जून 2023 की जो परीक्षा अभी हुई है, संपन्न हुई है, तो उनके रिजल्ट्स तो अभी निकलेंगे। अच्छा, तो वही है मैम मेरा। I would just like to add to what you have said about results. आप भोपाल से कॉल कर रही हैं, so it is for you and for other viewers who are watching this program that see result is a process. The exam ended on 7th of July 2023. और उसके बाद रिजल्ट जो है वो एक प्रोसेस है. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड यूनिवर्सिटी हैज इट्स पॉलिसी ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स विद इन 45 days. So obviously you will have to wait for a certain period before you get your results. There's no delay or anything. You just wait and you will get your results in time. Thank you. You don't have to. Part is that कि जो हमारा असाइनमेंट है वो कब तक हमें पता चल जाएगा कि लिखना शुरू कर दें? असाइनमेंट्स आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आप वेबसाइट से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकती हैं MEC सेकेंड ईयर के लिए, और अकॉर्डिंगली नॉर्मली दिसंबर जी. तो आप अभी चाहे तो 30 सितंबर जो टेंटेटिवली यही डेट होता है, आप अपने असाइनमेंट्स बनाकर सबमिट कर सकती हैं. वैसे चूंकि आपने MEC सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो जून 2024 में खत्म होगा. तो आप मार्च तक भी असाइनमेंट्स बना करके जून 2024 टर्म एंड एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकती हैं. ओके, थैंक यू सो मच मैम. सो हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं. इसमें मैं बता रही थी कि इग्नू में किस प्रकार की व्यवस्था है. यू हैव अ 3-tier स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो रीजनल सेंटर, उसको जिस रीजनल सेंटर से उसने प्रवेश लिया है, देश के हमारे 57 रीजनल सेंटर्स हैं, तो कहीं से जहां आपकी सुविधा हो आप एडमिशन ले सकते हैं, और वो फिर आपको एक लर्नर सपोर्ट सेंटर अलॉट करेंगे. ये तो ODL प्रोग्राम की व्यवस्था है. उसी के साथ साथ हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी 44 ऑनलाइन प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रहा है वर्तमान में. तो उसमें सारी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो LMS प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट को प्राप्त होंगी. तो इसमें बहुत सारे अन्य सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, जैसे काउंसलिंग है, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ mechanisms for support system. So before we come to those details that we will take up in the second half, in the first half I would request Dr. Moni to inform our viewers about the admission process in IGNOU. Like कहाँ से शुरुआत करें? मान लीजिए वो इच्छुक है किसी प्रोग्राम में फर्दर अपनी स्टडीज करने के लिए, हायर स्टडीज, हायर क्वालिफिकेशन. So what is the process in IGNOU? Thank you, madam.
I think, the advantage that we have with this teleconference system is that we can show you some things, because generally when we have a radio program, then we speak about many things about Ignou and other informations. तो मुझे लगता है मैडम ने बात की है एडमिशन के बारे में, और जैसा आप सबको पता है कि अंतिम तिथि नामांकन की एडमिशन की 10 अगस्त है, तो आपके पास समय बिल्कुल भी कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इग्नू में आगे की पढ़ाई करनी है या कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे आप अगर जॉब में हैं तो आपके करियर प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन हो, तो आप इग्नू की वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.ignou.ac.in। और जब आप इग्नू की वेबसाइट विजिट करेंगे तो देयर इज लाइक अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। पर चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से विजिट करेंगे, तो कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनको जब आप देखेंगे देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन which might help you out in which might help you in getting admission into Ignou, and probably you'll have a smoother journey in Ignou once you visit these links and seek information from there. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए, so that we can show what information is contained in the website. जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इग्नू की वेबसाइट है। एंड नाउ व्हेन यू इफ यू थिंक ऑफ टेकिंग एडमिशन इन इग्नू, एक बार एड्रेस बता दें इनको वेबसाइट का। www.ignou.ac.in ignou.ac.in. So this is the main website of Ignou, and when you go here then you can easily see, you can click on this link register online. जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। फर्स्ट इज फ्रेश एडमिशन इन द डिस्टेंस लर्निंग मोड, सेकेंड इज फ्रेश एडमिशन इन द ऑनलाइन मोड, प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन द ऑनलाइन मोड। और जब आप इन दोनों लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप देख सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए ये समर्थ का एडमिशन पोर्टल है, ignoadmission.samarth.edu.in. And here every information related to the programs that are being offered for admission is available here. What is the eligibility, how can you register and how can you apply for the program, every information is contained here. जैसा कि आप देख सकते हैं अंतिम तिथि 10 अगस्त है, और प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन जब आप इस लिंक पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम्स जो अभी ऑफर में है एट वेरियस लेवल्स, द सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा लेवल, पीजी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल एंड इवन एट द डिग्री लेवल, ये जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर में हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। So according to your interest and according to your work profile, you can select a program from here. And Madam was just saying that we have launched many new programs in Ignou. Madam, would you like to talk about some new programs? Yes, as you know that Ignou right now we can say has nearly more than, I would say, 270 programs on offer, and at various levels, like we just showed you on the portal, ranging from awareness to certificate to diploma, PG diploma, postgraduate diploma, undergraduate degree, postgraduate degree, and MPhil and PhD programs. So right now we are going to talk about the various programs ranging from awareness certificate level right up to undergraduate, postgraduate degree programs. And this process is ongoing. Like within a span of 2-3 months, Ignou has launched almost around I would say 10-15 programs at various levels. So if you see very recently for the July 2023 admission cycle, Ignou has announced launched 4 master's degree program, MSc programs by the School of Sciences. That is MSc Physics, MSc Geoinformatics, MSc Applied Statistics, and MSc Geography. Likewise, we have also launched undergraduate degree programs. Like if you see, we have the applied skill programs, BA applied skills, BCom applied skills, BSc applied skills, then BA applied skills in vocational and tourism management, and BA applied skills in micro and small MSME
program. So these, of course, are for the Agniveers. This is a specially designed skill-based program. But apart from this, we have just 2 days back, we have launched a diploma in apparel merchandising applied, and we have launched a certificate in early childhood special education enabling inclusion for the visually impaired. So, I mean, Ignou offers a diverse range of programs across a diverse range of disciplines, and you can take your pick depending upon your ability, your eagerness to pursue and gain knowledge or upgrade your skills, upgrade your knowledge, earn a higher degree, whatever be your interest. You can choose from this wide. It is not possible to spell out each and every new program over here, but as Dr. Moni Sahai just showed you, you could access the Ignou website and go to those to that link on the Samarth portal where we have the list of programs, and on clicking on that program you will get all the details, whether it is about eligibility or it is about duration, medium of instruction. Even you will get the list of regional centers and study centers where that program is on offer right now. So and as she has very rightly mentioned, that it is a very dynamic platform. So as you study it, it is very important for you to study the Ignou website, go through each and every aspect of that website to be thoroughly and correctly informed about how you're going to pursue your studies in Ignou. So this is about the various programs on offer. Moni, maybe we could tell them a little bit about yes, the admission process. Yeah. So just as ma'am informed that you can see these are the programs that are on offer. If you can show the screen, these are the programs that are on offer in the ODL mode, that is open and distance learning mode. And there are some more programs, 43 programs as ma'am just now informed. And these programs are also on offer for admission for July 2023 cycle. और यहाँ पर मोनी हम डॉक्टर मोनी एक बात कहना चाहेंगे, जैसा हम अर्ज कर रहे थे कि ODL एंड ऑनलाइन में स्टूडेंट्स जो एप्लीकेंट्स हैं वो अक्सर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. सो कैन वी जस्ट गाइड देम on coming to that, ma'am. So I would just like to inform that in the open and distance learning mode we have a range of programs, and in the online mode we have limited number of programs which are on offer. And the website for online programs is ignouiop.samarth.edu.in. Now, as just ma'am very rightly said, that what is the difference between open and distance learning mode and online mode? So when it is the open and distance learning mode, all the academic support, जितनी भी तरह की जो academic जो गतिविधियां आपको करनी होती हैं वो आपको स्टडी सेंटर के थ्रू करनी होती है. आपको एक स्टडी सेंटर से अटैच किया जाता है एडमिशन के बाद, और जो भी आपके जो कोर्स कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एकेडमिक काउंसलिंग है, असाइनमेंट्स हैं, कई प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो इस तरीके के जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो आपको स्टडी सेंटर के थ्रू करनी होती है. पर जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं वो आपको LMS के थ्रू करनी होती है, दैट इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो क्लासेस भी आपकी ऑनलाइन होंगी, आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन होंगी. बट देन हियर वी पुट अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर स्टूडेंट्स इज दैट इफ यू आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज लाइक a good internet connection, a proper desktop or a laptop with you, or if you're residing in an area which is properly networked, then probably you can opt for online programs. पर अगर आपको इन सब चीजों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और आप किसी रिमोट, किसी दूर दराज के इलाके में रह रहे हैं या किसी रिमोट रूरल एरिया में हैं, तो मेरा हम लोगों का सुझाव यही है कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए. और जैसा आपको पता है कि इग्नू का पैन इंडिया कवरेज भी है. वी हैव स्टडी सेंटर्स एंड रीजनल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. तो अगर आप किसी रिमोट इलाके में भी हैं तो वहां पे हमारा एक क्षेत्रीय केंद्र होगा जो कि आमतौर पे जो स्टेट कैपिटल होता है वो होता है, या फिर कई जगह कई राज्यों में हमारे एक से अधिक क्षेत्रीय केंद्र भी हैं. तो आपको ये सुविधा है कि आप अपने नियरेस्ट एग्जिस्टिंग स्टडी सेंटर पे जा करके आप ये सारी गतिविधियां कर सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ODL मोड एंड दी ऑनलाइन मोड. तो अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं और उसमें नामांकन करा सकते हैं. And then I would like to say that, before deciding on what program you have to take admission in, that is a very big decision because it affects your entire career and growth, everything after that. So for that, I will advise you to visit the Ignou website.
collect information about the programs that are being offered. Suppose if you're in need of a basic bachelor's degree, we have a variety of options. If you want some add-on program, like say a certificate or a diploma level, professional program, then for that also we have a number of options. And for that, again, if you can please allow me to present the screen, then I will show you from where you can get this information. First place is the Samarth website. जब आप समर्थ की वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी. जैसे अभी यहाँ आप प्रोग्राम देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन क्या है, किस माध्यम में आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी. और साथ ही ये भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि ये प्रोग्राम देश के किन किन स्टडी सेंटर्स पे चलता है. जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम करनाल में है, शिमला में है, जम्मू, भोपाल. सो यू कैन सी इट इज बीइंग ऑफर्ड थ्रू सो मेनी स्टडी सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. तो ये एक इस तरीके से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं. पर अगर आपको ये जानना है कि और कितने प्रोग्राम्स हैं जो टूरिज्म पे ऑफर में हैं, या इस तरीके के प्रोग्राम्स जो ऑफर में हैं, तो उसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां पर आपको स्कूल्स ऑफ स्टडीज में जाना होगा. क्योंकि जैसा मैडम ने अभी कहा था कि जो विद्यापीठ है, 21 विद्यापीठ, वो यहाँ मुख्यालय में स्थित है और इन जितने प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है वो सारे इन्हीं स्कूल के माध्यम से ऑफर किए जाते हैं. तो अभी जैसा मैंने कहा, अगर आप जाएंगे स्कूल, कोई भी स्कूल हम एक ले लेते हैं, जैसे स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस हम ले लेते हैं. अब जब आप स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की लिंक पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में बाईं तरफ यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखा है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्यक्रम जो फॉरेन लैंग्वेजेस में इग्नू ऑफर कर रहा है, हो सकता है आपकी रुचि जर्मन में हो, फ्रेंच में हो, रशियन में हो, या उर्दू में हो, अरबिक में हो, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो लैंग्वेजेस में है, फॉरेन लैंग्वेजेस में है, वो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की वेब लिंक पर उपलब्ध है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री लेवल पे मास्टर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज है, रशियन में मास्टर्स डिग्री है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के भी बहुत सारे कार्यक्रम ऑफर में है. उसी तरीके से अगर आप किसी और फील्ड में, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर की लाइन में आप अपना कंप्यूटर एप्लीकेशंस की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी वहां पे कुछ एड ऑन डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम साइंसेज की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे भी आप प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं या कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड हैं, जो इग्नू में ऑफर किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. जैसे मास्टर्स लेवल पे मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, और बैचलर्स लेवल पे BCA है, जो कि हमारा एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, और सर्टिफिकेट और PG डिप्लोमा लेवल्स के भी प्रोग्राम है. तो ये मैंने आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बताया कि किस तरीके से आप स्कूल्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां के प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं. और ये सारे प्रोग्राम्स काफी कुछ जनरल प्रोग्राम्स हैं, डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जो आपको प्रोफेशनल एडवांटेज देते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स हैं जो आप साइमल्टेनियसली, अगर इग्नू में आपने किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो साइमल्टेनियसली आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी एडमिशन ले करके आप उसको पढ़ाई साइमल्टेनियसली जारी रख सकते हैं. तो आपको उसी टाइम पीरियड में एक ड्यूअल एडवांटेज आपके पास हो जाएगा कि आपके पास 2 डिग्रियां होंगी जिनको आप अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं. मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट द ड्यूअल डिग्री? जैसा अभी आपने बताया डॉक्टर मोनी, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि इग्नू से अभी तक ये था कि विद्यार्थी एक 6 मंथ कोर्स और एक मोर देन 6 मंथ ड्यूरेशन, 1 ईयर या 2 ईयर ड्यूरेशन का प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. लेकिन जुलाई 22 सेशन से एज पर UGC regulations, यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो नोटिफाइड दैट दे कैन परस्यू more than one program, one program from another institution, another university, and one from IGNOU at the undergraduate or the postgraduate level. Simultaneously आप कर सकते हैं. इग्नू से यदि आप एक से अधिक प्रोग्राम करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो 6 मंथ का होना चाहिए एक प्रोग्राम, और दूसरा 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन दैट यू कैन डू. Also, you can pursue 2 programs in ODL mode at the undergraduate degree and postgraduate degree level, but in 2 separate admission cycles. Whether both programs are in the ODL mode, that is open distance learning mode, or both are in the online mode, or one is in ODL and one is in online mode. तो ये
आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन 2 अलग एडमिशन साइकिल्स में। जैसे एक में आपने जुलाई सत्र में प्रवेश लिया, तो दूसरे प्रोग्राम में आप जनवरी साइकिल में प्रवेश ले सकते हैं। सो कई विद्यार्थी ऐसे हैं इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम को परस्यू करने के साथ साथ वो दूसरा प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, चाहे वो इग्नू से ही हो या किसी अन्य यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में हो, तो यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आप किसी अन्य संस्था या अन्य विश्वविद्यालय में हैं, तो जो क्लैश ऑफ एग्जाम डेट्स या काउंसलिंग डेट्स होगा, उसके लिए वो विश्वविद्यालय इग्नू जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी फर्स्ट हाफ की चर्चा डॉक्टर मोनी हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद, तो जुड़े रहिएगा। वी विल जॉइन यू बैक विद यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन। तब तक इंतजार कीजिए। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. Ignou employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. नमस्कार और इस सत्र में आपका पुनः स्वागत है।
I am here, Hema Pant from the Regional Services Division, joined by my colleague Dr. Moni Sahai from the Regional Center, Delhi 1. और इस सेशन के पहले सत्र में हमने चर्चा करी इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि इग्नू के एडमिशन्स वर्ष में 2 बार होते हैं, जनवरी जुलाई में, और अभी हम जुलाई 2023 के प्रवेश सत्र में हैं, जिसके लिए नामांकन की तिथि जो है विश्वविद्यालय ने रखी है 10 अगस्त, बढ़ा दी है 10 अगस्त तक, तो बहुत कम समय है. प्लीज एनरोल फॉर योर चोजन program, for your desired program, and attain your dreams, fulfill your dreams of acquiring qualifications, higher degree qualifications. Ignou will be your best choice, I'm sure. So we were discussing about the different categories, different types of programs offered at various levels, and what are the things that you have to keep in mind. My colleague Dr. Moni Sahai described how you are going to navigate the very dynamic Ignou website, that is which can be accessed at www.ignou.ac.in, and also the Samarth platform on which all the admission process is taking place, and the complete gamut of information is available on the Samarth platform. उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं निवेदन करूंगी अपनी कोलीग डॉक्टर मोनी से बताने के लिए, कि डिफरेंट जो हमारे जो मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो इग्नू की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, और वो है हमारा कॉमन प्रॉस्पेक्टस. हर प्रवेश सत्र में, इन एवरी एडमिशन साइकिल, the university brings out the common prospectus, and if we could show our viewers the common prospectus for the July 2023 admission cycle, and what are the special features, Dr. Moni, which the students can access in that. We would like to request you to apprise them about that. Yes, ma'am. I would again like to present the screen because I think that will have a greater impact for students. If you see the Ignou website, then there is a link of students zone, and when you click on the student student support, when you go there, then you will see there's a section of there's a link for downloads. When you click on that link, then you can see that the various kinds of the prospectuses that are available, like the common prospectus which we were just talking about, is available here. The assignments, like one student just called and inquired about assignments, that whether it is there or not. So assignments can be downloaded from here, the existing students, and plus other things that can be helpful for our existing learners. But now we are talking about admission, so the common prospectus link is here. And when you click on that link, you can see that the common prospectus for July 2023 cycle अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारा जो ई प्रोस्पेक्टस है हमारा जुलाई 2023 साइकिल के लिए, वो आपके सामने खुल जाएगा. और जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, या जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे जो जितनी स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं, उनसे रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो सारी इस प्रोस्पेक्टस में उपलब्ध है. तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं. जैसे अगर हम इनको एक प्रोग्राम का दिखाएं डॉक्टर मोनी, फॉर एग्जांपल इफ वी कुड लाइक सपोज अगर आपको देखना है एमसीए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये सबसे तो मैंने यहाँ पे एमसीए प्रोग्राम टाइप किया है, और शो द स्क्रीन, वी रिक्वेस्ट यू. तो ये एमसीए प्रोग्राम की जो जानकारी है वो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसा आप देख सकते हैं. जो सारे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन और कब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी इस टेबल में उपलब्ध है, जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम एमसीए के लिए आपको दिखाया है. और उसके आगे जब आप जाएंगे तो एमसीए प्रोग्राम की जितने भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज क्या है उस कोर्स में, कितने क्रेडिट्स का है, कब तक आपको कंप्लीट करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी. और इसके साथ साथ वो भी लिखा रहता है कि कौन इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं जी, और उनका कांटेक्ट डिटेल्स भी उसमें रहते हैं, क्योंकि अक्सर हमने पाया है हमारे पास क्वेरीज आती हैं इस प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में, या कितने क्रेडिट्स हैं, या कुछ भी कोर्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में. सो यू विल इजिली बी एबल टू कॉन्टैक्ट द कोर्स डिजाइनर, आई मीन द कोर्स coordinator of that program.
that is also available. तो बहुत ही महत्वपूर्ण, I would say this is the first textbook in the hands of the distance learner. Exactly, So जो भी प्रोग्राम आप चूज करें उसको ध्यान से पढ़ें, सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो है जो प्रारंभ में आपको चाहिए वो प्रोस्पेक्टस में उपलब्ध रहती है. उसके बाद जो है प्रोग्राम गाइड फिर आप देखिए, वो जो आपने वेबसाइट पे दिखाया था, they could access the program guide through the school web page. That is also possible. That is also, they will come to that, ma'am. Yeah. So this is the common prospectus, as I have shown you the link from where it can be accessed. So you can access this common prospectus, and in addition to this, there are also some videos, introductory videos to the programs that are being offered from Ignou, and for that you will have to scroll down in the main page of Ignou, and there is this link of web enabled academic support, that is Vyas. We popularly call it Vyas website, and when you come here you can see that there are many videos, introductory videos for the programs that are being offered. Like you can see here, there is this video on master's program in gender and development studies, another video on masters of art, drawing and painting, similarly masters of arts and sustainability science, and many such videos for BSCG programs for different electives, and then certificate and diploma level programs. All these videos are there. So if in case you want more information, आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, प्रोग्राम के स्कोप के बारे में जानना है, उसके क्रेडिट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, या जो भी चीज जानकारी चाहिए वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है. तो ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं. So this was one more important thing that we wanted to talk about. And हाँ, तो ये आवश्यक है कि before they are taking admission, if they read the prospectus carefully, then they will be able to choose and decide on what program of study. इसके साथ साथ अगर हम वेबसाइट से थोड़ा उनको प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बता दें, क्योंकि क्या तैयारी एप्लीकेंट को अपने पास रखनी है, जैसे फोटोग्राफ हो गया, उसके स्पेसिफिकेशंस हो गए, ये सारी जानकारी भी वेबसाइट पर ही जो समर्थ प्लेटफॉर्म है उस पे जो एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल टाइप है उसके बारे में हम उन्हें थोड़ा बता सकते हैं. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप ऑनलाइन बैठते हैं फॉर्म भरने के लिए, देन सम बेसिक थिंग्स शुड बी रेडी विथ यू, लाइक द क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दैट मेक यू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अ प्रोग्राम. आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, और आपके पास वो लॉग इन क्रीडेंशियल्स या बैंक डिटेल्स होने चाहिए जहां से आपको फीस पे करनी है. तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए. और यहाँ पर एक जो सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि जब आप साइबर कैफे में जाते हैं और वहां से आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप फीस पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपके खुद के बैंक अकाउंट से हो, आपके खुद के लॉगिन क्रीडेंशियल से हो. क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर किसी कारणवश आपकी जो एडमिशन की फॉर्म आपने यहाँ पे भरी है वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपकी फीस विश्वविद्यालय जो है आपको रिफंड करती है, आपको वापस करती है. तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को वो फीस वापस न जाके जो साइबर कैफे जो चलाते हैं उनके अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि आपने उनकी क्रेडेंशियल्स यूज की होती है. तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने ही सारे क्रेडेंशियल्स का यूज करें. और एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर एक सिंगल गो में अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपकी जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगी, और नेक्स्ट जब भी या तो इंटरनेट ग्लिच की वजह से या फिर किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर आप एक बार फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप उसको सेकंड जब भी आपको मौका लगे और आप बैठते हैं तो आप अपनी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. जैसा मैडम ने कहा कि जो हमारा समर्थ का वेबसाइट है दैट इज फुली लाइक वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट. तो वहां पर जब आप जाएंगे तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं और इससे ज्यादा भी कई बातें जो आपके लिए जरूरी है जानना, वो जब आप समर्थ के पोर्टल पे जाएंगे, एक बार प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए. जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकेंगे एक एडमिशन FAQs है, एडमिशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन. तो यहाँ ये सारी जानकारी आपके पास, जो आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको कब क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ये सारी बातें. जैसे कि जब आप कंप्यूटर में कुछ अपलोड करते हैं तो हर डॉक्यूमेंट का एक साइज होता है, इट मे बी इन KBs और MBs और लाइक दिस. तो ऐसे आप अगर सिग्नेचर का एक
पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि इतने केबी की होनी चाहिए, तो आप उतने केबी की ही बना करके उसको अपने पास रेडी रखें। और जब आप फॉर्म भरते हैं उसके पहले आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिए, बिकॉज दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल बी स्मूथली बी एबल टू फिल अप योर फॉर्म। और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो समर्थ पोर्टल पर जाकर के खुद को रजिस्टर कर ले एंड देन यू कैन easily do the processes that follow. And most importantly, please remember the last date, which is 10th of August, because don't wait for the last date. University may or may not extend the last date, so it is better that you fill it up today if you're planning to take admissions in Ignou. That's very well explained, Dr. Moni. अब मैं क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा ही समय शेष है, तो मैं ये बताना हम लोग अपने दर्शनार्थियों को या शिक्षार्थियों को ये बताना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया प्रवेश के लिए ये प्रक्रिया है, उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो क्या होगा जैसे ही वंस दे गेट अ कंफर्मेशन, once they have taken admission and they have paid the fees, they will get a confirmation on their mobile, they will get an email, और उसके बाद आपको ये सूचित किया जाएगा कि आपको अब इसके आगे कैसे अपनी अध्ययन की प्रक्रिया को जारी रखना है और कहाँ जारी रखना है, किन माध्यमों से जारी रखना है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप ये समझें कि डिस्टेंस एजुकेशन में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन लर्निंग में आवश्यकता है कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो भी प्रोएक्टिव रहे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दैट यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर. You have taken admission because of your own motivation, your own dedication, your own interest. The university is there to facilitate you. The university is there to provide you all academic and administrative support so that you can pursue your program of study in a very progressive and a consistent manner. लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है कि आप तत्पर रहें, तैयार रहें, जागरूक रहें और जो भी आपको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो जानकारी मिलती है, उसका अनुपालन करें, तो आप निश्चित तौर पर सफल रहेंगे. तो सबसे पहला डॉक्टर मोनी, what happens once they get their confirmation, since you are dealing with a lot yes, of yeah. I would like to say that see actually university gives a window period for admission. ये जो हमारा एडमिशन साइकिल जुलाई 23 के लिए है, इसकी एडमिशन जो है वो जून से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कई बच्चों ने नामांकन करा लिया है. ये प्रक्रिया हमारी 10 अगस्त को खत्म हो जाएगी. तो जिन बच्चों ने जून में एडमिशन लिया है, कई बार उनके मन में ये सवाल होता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई और मैंने एडमिशन बहुत पहले इग्नू में भर दिया है फॉर्म. तो मैं सभी को बता दूं कि जब तक ये जो विंडो पीरियड है ये क्लोज नहीं होता है एडमिशन का, तब तक उस पे कुछ ज्यादा काम नहीं होता है. एंड वंस द एडमिशन प्रोसेस, आई मीन द लास्ट डेट गेट्स ओवर, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है और कुछ ही दिनों में फिर सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपका स्टडी सेंटर क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है. इनफैक्ट जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके आपके समर्थ लॉगिन, जो आपका लॉगिन है, वहां पे आपको मिल जाता है. तो आपको एक बार अगर आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है, फिर आपसे यही जो एक सुझाव जो हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने स्टडी सेंटर से टच में रहें. अगर आपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अपनी स्टडी सेंटर पे अपना टच बनाए रखें, क्योंकि जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं वो स्टडी सेंटर पर होती हैं. चाहे वो एकेडमिक काउंसलिंग की हो, काउंसलिंग ऑनलाइन हो सकती है पर स्टडी सेंटर के ही थ्रू होगी. और असाइनमेंट सबमिशन की भी जो प्रक्रिया है वो स्टडी सेंटर के थ्रू होती है. हालांकि हर क्षेत्रीय केंद्र पे थोड़ा थोड़ा ये वैरी करता है, कहीं कहीं पर ऑनलाइन भी असाइनमेंट्स सबमिट होते हैं. और सिमिलरली जो गतिविधियां हैं वो आपको करनी पड़ेंगी. क्या क्या गतिविधियां आपको करनी है, इसके लिए जैसा मैम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने प्रोग्राम गाइड को पढ़िए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर प्रोग्राम. और मैं एक बार और स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहूंगी उनको, सिर्फ बताने के लिए कि उनको प्रोग्राम गाइड कहाँ उपलब्ध है, क्योंकि कई बार जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये सवाल मन में रहता है कि हमारे तो अभी स्टडी मटेरियल नहीं आया, प्रोग्राम गाइड कहाँ मिलेगी और इस तरह की बात. तो मैं एक बार उनको और बताना चाहूंगी कि जब आप इग्नू में एडमिशन ले लें तो यहाँ पर इग्नू की मेन वेबसाइट पे आपको ई ज्ञान कोश का लिंक दिखेगा. ई ज्ञान कोश इज एन ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ स्टडी मटेरियल्स ऑफ इग्नू. जिस भी प्रोग्राम के हो, और ये फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के किसी और प्रोग्राम में जिसमें आपकी रुचि हो. जब आप ई ज्ञान कोश की लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे जो स्टडी मटेरियल है उसकी लिंक आपको मिलेगी, विच हैज बीन कैटेगराइज्ड स्कूल वाइज. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर स्कूल का अलग एक प्रोग्राम होता है.
तो आप उस प्रोग्राम का आप उस स्कूल के लिंक पर जाकर के उस प्रोग्राम के डिटेल्स को आप हासिल कर सकते हैं। जैसे ये ई ज्ञान कोश की लिंक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल का एक वेब लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया कि स्कूल वाइज ये सारे स्टडी मटेरियल्स आपको कैटेगराइज्ड मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एमसीए की बात की थी, तो यहाँ पर आप लेवल्स पे चले जाएंगे और जब आप देखेंगे यहाँ पे मास्टर्स से लेकर के सर्टिफिकेट लेवल तक के सारे जो प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के द्वारा ऑफर किए जाते हैं उनकी स्टडी मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। जब हम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो करेंटली जो प्रोग्राम्स ऑफर में आप देखेंगे एमसीए न्यू का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो रिवाइज प्रोग्राम है हमारा, वो यहाँ उपलब्ध है सारे सेमेस्टर्स के लिए। और साथ ही आपको इंतजार नहीं करना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही किताबें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप फोर्थ सेमेस्टर तक की किताबें हैं उपलब्ध और आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और जैसा मैंने सबसे जो जरूरी बात है वो ये बताई कि प्रोग्राम गाइड, तो प्रोग्राम गाइड से आपके प्रोग्राम के साथ आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती है और इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे गाइडलाइंस होते हैं कि कब आपको क्या करना है और कहाँ पर करना है, और इस तरीके की जो जानकारियां होती है वो इस प्रोग्राम गाइड में उपलब्ध होती है। और ये सिर्फ एमसीए के लिए ही नहीं है, ये सारे ही प्रोग्राम्स जो है वो सबके लिए है, अलग अलग स्कूल वाइज है जैसा मैंने कहा। तो आप ई ज्ञान कोश की वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें अगर आपने नामांकन ले लिया है। जैसा मैं डॉक्टर मोनी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे ये बहुत अच्छा हमारा एक रिसोर्स है विच इज वेरी यूजफुल, क्योंकि जो ओडीएल मोड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिन भी प्रोग्राम में, तो उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट डिलीवर होता है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना ह्यूज सिस्टम है, तो हो सकता है कभी देर हो जाए मटेरियल मिलने में। सो दे उस पीरियड में जब तक आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच जाता, आप इस रेपोजिटरी में अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं जो अभी मैडम ने आपको डिस्प्ले किया, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू सेव टाइम एंड आप उस समय में आप उस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ नॉट जस्ट द सेल्फ लर्निंग मटेरियल, देयर आर अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन ई ज्ञान कोश। जैसे फेसबुक, नाउ इग्नू इज यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सटेंसिवली। वी हैव द ऑफिशियल इग्नू फेसबुक पेज, वी हैव द ट्विटर हैंडल, वी have the Instagram and so on and so forth, and likewise we also have the regional center websites. ये तो इग्नू की मेन वेबसाइट है। Can we just show them the regional center website for example? Kindly show the screen. ये बताने के लिए कि आपका जो एक्सेस है या जो रिसोर्सेज हैं वो डिजिटल मोड में बहुतायत उपलब्ध हैं। तो आपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है, नो डाउट यू विल गेट इट, बट यू कैन ऑल्सो इन द मीन टाइम गेट रेडी विद द अवेलेबल डिजिटल कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन द इग्नू वेबसाइट। इसके साथ साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि इग्नू का डिजिटल कंटेंट जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है, विच इज द इग्नू ई कंटेंट ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत जल्दी में हैं, तो यू कैन एक्सेस योर स्टडी मटेरियल ऑन योर मोबाइल फोन एज वेल। तो ये सुविधाएं विश्वविद्यालय ने डिजिटाइजेशन की ओर जो कदम है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है, दैट लर्नर्स हैव टू नाउ get used to digital mode of learning. Digital learner support mechanisms have been provided by the university, by Indira Gandhi National Open University, and they are easily accessible to the learners. So and also we have this provision of 15% fee waiver. In case a student wants to opt only for digital content, then you will also get a 15% off in your fee, in the program fee. So these are some of the digital modes. और इसके साथ साथ रीजनल सेंटर वेबसाइट अगर हम दिखा दें, जैसे मान लीजिए Delhi 1, let's say. So could you please show the screen? In fact, ma'am has talked about two things, so I'll just take very less time because we are already having less time in our hands. So first is digital content. So I'll add a few more things to the discussion about e-Gyan course that we just had. So I will show you
here that there is a student section at the bottom of the page in Ignou website. वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं. आप देख सकते हैं जैसे ऑडियो रिसोर्सेज ऑफ EMPC. जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑडियो रिसोर्सेज पे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्कूल वाइज जो भी ऑडियो रिसोर्सेज है, जो हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं. अगर आपने जिस भी प्रोग्राम में, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस की हमने बात की थी, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आप कई जो आपके प्रोग्राम रिलेटेड ऑडियो रिसोर्सेज हैं उनको आप देख सकते हैं. एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव द वीडियो रिसोर्सेज ऑफ EMPC विच इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर, जहाँ पे सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इग्नू के प्रोग्राम्स की. जब आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्कूल वाइज बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम्स हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जो आप देख सकते हैं. एंड यू कैन एनरिच योर सेल्फ. इट इज नॉट ओनली द स्टडी मटीरियल अपॉन विच यू हैव टू रिलाई. देयर आर मेनी अदर एडिशनल ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज दैट यू कैन रेफर टू. ये है. और इसके अलावा एक और जो जरूरी चीज है वो है स्वयं प्रभा चैनल्स विद द डायरेक्ट टू होम चैनल्स, DTH चैनल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. आप यहाँ पर भी जाकर के चैनल 17, 18, 19 और 20 जो है वो इग्नू को अलॉटेड है. और यहाँ पर भी स्कूल्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो लाइव चलते हैं, रिकॉर्डेड चलते हैं. तो ये भी शेड्यूल आप, जैसा मैंने अभी दिखाया था कि इग्नू की वेबसाइट पे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको उपलब्ध है. स्वयं प्रभा चैनल्स के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने रिसोर्स दिखाया, दैट इज द स्वयं प्रभा चैनल्स. हम इग्नू जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी एकेडमिक काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू आवर रीजनल सेंटर्स यूजिंग दीज स्वयं प्रभा चैनल्स एंड द ज्ञानदर्शन चैनल. वी आर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस in 12 regional languages and also in English. So this is an additional support with the support of the channel based medium which the university provides to its learners. So हमारे पास please. Yes, I'm just coming to the regional center websites because we talked yes, about that's very important. So here you can see, just I would like to share the screen once more. You can see there is this regional network over here. So you can go to the regional network and there is this regional centers. You click on the regional center link and here you can see कि यहाँ पर ये लिखा है रीजनल सेंटर की वेबसाइट्स. तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. अगर आपने दिल्ली 1 में सपोज आपने एडमिशन लिया है जैसा मैम ने कहा, तो दिल्ली 1 की जो वेबसाइट है RC दिल्ली 1 की वो यहाँ पर है. और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो स्टडी सेंटर्स जो दिल्ली 1 के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध है. जितने स्टडी सेंटर्स हैं, कहाँ हैं, कब खुलते हैं, वहाँ प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर है स्टडी सेंटर के वो कौन है, कौन कौन प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है. और इसके अलावा जो काउंसलिंग शेड्यूल है, जैसा मैंने बताया कि एकेडमिक काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके प्रोग्राम का. तो जो भी काउंसलिंग शेड्यूल स्टडी सेंटर से आते हैं वो वेबसाइट पर यहाँ अपलोड हो जाते हैं. कई जगह स्टडी सेंटर कोड से अपलोड होते हैं और कई जगह स्टडी सेंटर के नाम से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल जो हमारे जनवरी 23 सेशन का है वो यहाँ पर उपलब्ध है. और प्लस अदर लिंक्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो भी यहाँ पे जो यूजफुल लिंक्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो उपलब्ध है. जो वेबसाइट है वो जैसे ये rcdelhi1.ignou.ac.in है. सिमिलरली अगर आपको दिल्ली 3 की वेबसाइट पे जाना है तो वो rcdelhi3.ignou.ac.in है. तो बस RC with the name of the regional center.ac.in is the regional center website. And one more thing is that, you know, the website of Ignou and the website of regional centers contain different information. So once you have taken admission, it is more important for you to visit the regional center website. That yes, is all from me. That's very important because when you are in that particular regional center, all specific, for example, why we are saying this is now, for example, assignment submission. As you all know, assignments are a very important component. It is a mandatory component of your study in Ignou. Every course you have to do one assignment and submit it. Now that mode of submission, whether it is at the study center in face-to-face mode or whether the regional center is taking it in the online mode through email, through Google or whichever mode, उस जानकारी के लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप उस क्षेत्रीय जिस भी क्षेत्रीय केंद्र पर आपका नामांकन हुआ है आप उनकी वेबसाइट को देखें, क्योंकि वहां पर वो सूचना उपलब्ध होगी कि
आपको असाइनमेंट कहाँ कब कितने समय में जमा करना है और कैसे आपको अपना असाइनमेंट इवैल्यूएशन के बारे में जानकारी मिलेगी. तो रीजनल सेंटर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन द RC website. So these are some of the support mechanisms. As we told you, assignments are very important. You have to be very vigilant and very proactive about getting assignments, which madam just showed you on the Ignou website, or हर सेशन में आप उसी सत्र का असाइनमेंट जमा कर सकते हैं. मान लीजिए आपने जुलाई में प्रवेश लिया और मार्च 31 लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की फॉर टेकिंग एग्जाम इन जून. सो यू हैव टू डू द असाइनमेंट फॉर जुलाई 23 सेशन. सपोज यू मिस इट, यू डू इट इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, बट बी श्योर दैट यू आर राइटिंग द असाइनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन. उसके लिए आप वेबसाइट पर उसको देख लीजिए. जो भी असाइनमेंट उपलब्ध होगा उस पर जो डेट होगी उस हिसाब से आपको जमा करना होगा. तो ये और बहुत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं. एक और है, जो अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो वी हैव एन ऑनलाइन पोर्टल विच इज द igram पोर्टल. अभी समय नहीं है कि हम आपको वो सारा विस्तार से दे पाए, तो आप वेबसाइट का अध्ययन करिए. इग्नू की वेबसाइट, रीजनल सेंटर वेबसाइट, गो टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, you will get all the information that you desire. So I would like to thank Dr. Moni Sahai for being with us in this session, and also the team of the Electronic Media Production Center, all our regional centers, all our viewers, and we look forward to your encouraging participation next week, Tuesday, 3 to 4 p.m. for the open session on student support. Thank you and namaskar. Thank you. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं. इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे. चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं. ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है. इन कूड़े के पहाड़ों में हैं हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि. कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं. अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है. कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है. यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं, या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है. कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं. कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा. तो फिर देर किस बात की, चलिए समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने. अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में दाखिला लें. हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं. अधिक जानकारी के लिए देखें www.ignou.ac.in. धन्यवाद.
Namaskar. I welcome you all in this class of mathematics. So, in last few classes we discussed functions. Now, today we are going to discuss progression. Progression is also a type of function, and the only difference, it is a special type of function in which the domain is set of natural numbers. Range can be any set. If range is a subset of real numbers, then we call it a real sequence. So, function such that suppose this is set of real numbers, set of natural numbers, and this is a subset of real numbers. Say this is 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. So, this is a sequence in which function is defined from natural number to a subset of real number. Now, how do we represent a sequence? There are various methods representing sequence. The most simple one is we can write first few terms of the sequence, and so that the rule is clear that how the other terms will come. So, there are several ways of representing a sequence. Writing first few terms, but it should give that we can write the other terms of the sequence. So, rule should be clear. Suppose a sequence is represented by its nth term n. So, it is 1, 1 by 3, 1 by 4. So, here by seeing to this sequence, it is clear that how the other terms will come, because 1 divided by n is the nth term of the sequence. Similarly, suppose the series is 1, 4, 9, 16, 25 and so on. So, here also pattern is clear. So, you can write the other terms of the sequence where the domain is the set of natural number. So, this is also
a sequence. Now, other method is that we define the nth term of the sequence. Okay. So, the other method is define nth term. So, suppose that nth term is 1 upon n plus 1. So, what would be the sequence? It will be equal to the first term 1 by 2, the second term 1 by 3, the fourth term 1 by 4, and so on. Similarly, if you define the nth term n square by 2n, so the first term will be 1 divided by 2, that is 1 by 2. The second term 4 divided by 4, so it will be 1. The third term 9 divided by 6, and so on. So, this is also a method. Now, other method is recursive method, where you also define the first few terms and then a formula for the nth term. So, suppose example is A1 is equal to A2 is equal to 1, and then an plus 1 is equal to an plus an minus 1 for all L n greater than 2. So, first two terms are given. So, what will be the sequence? This will be 1, 1, and then the term is the sum of the previous two terms. So, this will become 3, and this will become 4, 3 plus 1, 4. Sorry, there is a mistake here. The third term will be sum of the previous two, so it will be 2, not 3. Okay. And the next term will be 2 plus 1, 3. Next term 3 plus 2, 5. Then 5 plus 3, 8, and so on. So, this is a sequence. This is a quite famous sequence known as
Fibonacci sequence. Sorry. He was a great mathematician who found out that sequence, and this is a quite useful sequence. It is used in computer science algorithms and in biology and at many other places. So, it is a very famous Fibonacci series. If I can draw a pictorial view of this. So, it is the first two terms were, remember, 1 1. So, if I represent it by a square, this is 1 1, and the third term the third term was 2. So, it was a square of, let us represent by 2. The fourth term will be 2 plus 1 3. Then 3 plus 2 5. Five plus 3 8. Eight plus 5 13. So on, we can move here. So this way we can represent this Fibonacci series, and this is a very famous series named after the mathematician who discovered it, and it is used at many places. It is so famous that a particular journal is devoted to this Fibonacci. Then there is another method where we can, the nth term is defined with several formulas, say n by 2 if n is equal to 2, 4, 6 even number, n minus 1 by 2 if n is odd, 1, 3, 5 and so on, n minus 1 or 2 or n plus 1 by 2 say. So, this series will be, the first term will be 0 because 1 minus 1 by 2 0. The second term will come here 2 by 2 1. The third term will come here 3 minus 1 by 2. This will also 1. The fourth term will be 4 by 2 2. The fifth term will be 5 minus 1 4 by 2 2.
again the sixth term will be 6 by 2 3, seventh term 7 minus 1 6 by 2, it will be again 3. So, this will be the sequence by this formula. So, these are the methods from where you can you can represent the sequence. So, let us see example. Suppose Tn is given by n square if n is equal to 1, 3, 5, let us say odd, and 1 upon n plus 1 if n is even 2, 4, 6. So, then what will be the series? Say n is equal to 1. So, it will come here. So, it will 1, n is equal to 2. So, it will come here. So, 1 divided by 2 plus 1 3. Then n is equal to 3. So, it will be 9 here. N is equal to 4, 4 plus 5, 1 by 5, and so on. Similarly, you can solve the problems if the series is given, either few terms or any of the method series is defined, you can solve the problems. Suppose Tn is given as root n or say root n plus 1. So, what will be T1? T1 will be 1 plus 1 is equal to 2. T2 is equal to root 2 plus 1. T3 is equal to root 3 plus 1, and so on. T4 is equal to 2 plus 1, again 3. So, you can find out the series. Suppose Tn given 2 by root n, not difficult, very simple. You can find out the terms T1, T2, T3, T4. The first term will be 2 by 1, 2. Second term will be 2 by root 2. So, it will be root 2. Third term will be 2 by root 3. By root 3. Fourth term will be 2 by root 4, it means it will be 1 by 2. So, you can find out. Now, let us define arithmetic progression. What is arithmetic progression?
it is also a type of function, type of sequence which has a definite pattern. So, suppose a sequence is 1, 3, 5, 7, 9. It has a definite pattern. What is the pattern? That the difference of any two consecutive numbers is same. Say 3 minus 1 it is 2, 7 minus 5 it is 2, 9 minus 7 it is again 2. So, the difference of consecutive numbers a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is same, and this is a constant. So, this we call it is in arithmetic progression. Okay. So, you can check whether a sequence is in arithmetic progression or not, and for checking this is a simple method. You take the difference of consecutive terms, and if it is coming constant, then it is in arithmetic progression. If formula is given, the formula of nth term, then what you can do, that you find out the difference of a n plus 1 minus a n, and if it is independent, the result is independent of say n, then it is in AP arithmetic progression, because it is a constant term, and if it is not independent of n, then it means it depends on n. So, it is not constant. So, it is not arithmetic progression. So, let us see few examples. Say series is 1, 4, 9, 16, 25 and so on. So, let us check whether it is AP arithmetic progression or not. So, A2 minus A1 is equal to 4 minus 1, 3. A3 minus A2 is equal to 9 minus 4, so it is 5. So, it is not AP. Similarly, let us take an example. One, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and so on. Let us check whether this sequence is in AP or not. So, A2 minus A1 is given by half minus 1 is equal to minus half. A3 minus A2 is equal to 1 by 3 minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 6. So, this is not AP, because you can see
the difference of consecutive terms is not constant. Suppose nth term is given. So, an or Tn is defined as 1 divided by n plus 1. So, if we have to find out whether this series is in AP, what will be the series? Series will be, the first term will be 1 by 2, the second term will be 1 by 3, and the third term will be 1 by 4. But we have already seen that this is not in AP, we have already checked it earlier. So, let us take another example. Let us take another example. This is not in AP, we know it because we have already checked it. Let us take another example. An is equal to 4n plus 5. This is how the nth term is defined. Now, if we find out an plus 1 minus an, so it will be equal to 4 n plus 1 plus 5 minus 4 n plus 5, okay, an plus 1 minus n. So, let us solve it. It will be equal to 4n plus 4 plus 5 minus 4n minus 5, because if open the bracket, then these two terms will become minus. So, this will be cancelled out, this will be cancelled out. So, it will be become 4. So, this is a constant term independent of n. So, this will be in AP, arithmetic progression. You can find out the sequence. The A1 is equal to 4 plus 5 9, then A2 is equal to 8 plus 5 13, A3 is equal to 12 plus 5 17, and then A4 is equal to 16 plus 5 21, and so on. So, here you can see the difference is 13 minus 9 is 4, again 17 minus 13 is also 4, 21 minus 70 is also 4. So, this is it AP. Let us take another example. Suppose an is given by n square plus n. So,
what will happen? Let us check it. N plus 1 minus an. So, this will become n plus 1 whole square plus n plus 1, because we are putting n plus 1 here in place of n, minus an. An will be n square plus n. So, this will be equal to n square minus 2n plus 1 plus n plus 1 minus n square, because if you open the bracket, the sign of these two will become minus n. So, these two will be cancelled out, this will be also cancelled out. So, it will become 1 plus 1 2 minus 2n plus 2. So, you can see here that the common difference, we are getting this term n. So, this is not constant. As the n will change, the value of difference is dependent on n. So, this will not in AP. So, we can solve the problems related to AP. They are quite easy. What is the standard form of AP? Arithmetic progression. It is same as we have already defined. The first term is say A, then the second term will be A is the first term and D is the common difference. We call it common difference. Difference of each consecutive terms is D. So, this will A plus D, then this will become A plus 2D, A plus 3D and so on. So, this is the standard form. Now, suppose we have to find out, looking to this, what is the general term, nth term. Suppose A n. So, you can see the first term we are getting A, second term A plus T. It means that n is 2, so 2 minus 1 into D. Third term we are adding 2D, so 3 minus 1 into D. So, the formula for nth term will be A plus n minus 1 into D. It is quite obvious, you can check it. So, this will give A1 will be 1 minus 1 0 into D. So, it will become A. A2 will be A plus 2 minus 1 1 D. So, A plus D. A3 will be equal to A plus 3 minus 1 2 2D. So, A plus 2D. So,
you can find out the nth term if A and D are known to you. This is quite simple. You might have learnt earlier. It is only we are refreshing here to you, because the sequence and series will be used in many of your courses, and you might have forgotten. So, we are repeating it. So, suppose a series is given 5 plus root 3, 5 plus 2 root 3, and so on. So, we want to know what is the nth term, a n. So, here the first term is a. So, a plus n minus v 1, and what is the common difference? Common difference is root 3. See, a 2 minus a 1, so it is root 3. Again a 3 minus a 2 is 5 plus 2 root 3 minus 5 minus root 3 will be equal to root 3. So, common difference is root 3. So, this is the formula for nth term, that 5 plus n minus 1 root 3. Now, we will see that how we can find out the sum of n terms in a arithmetic progression sequence. So, let us write the n terms. S n is equal to, the first term will be a, then the second term will be a plus d, then the third term will be a plus 2d, and so on. What will be the n minus 1th term? This will be a plus n minus 2, because n minus 1 minus 1. So, it will become n minus 2 t, and what will be the nth term? A plus n minus 1 d. Now, we write again the same formula in reverse order. The nth term will be first. So, this will become a plus n minus 1, sorry, the n minus 1 term will be a plus n minus 2 d, and so on. The second term will be a plus 2 d here, and the first term will be a here. Now, this and this is same, this is only written in the reverse order. Now, I am going to sum it. So, this side LHS
will become 2Sn is equal to, if we add each term, so this will become a plus a 2a plus n minus 1 d. Two a plus n minus 1 d. Again the second term, a plus t is here, a plus n minus 2 d is here. So, a and a, this will become 2a plus n minus 2 d is here plus d is here. So, 1 d will be cancelled, or here it will be n minus 2 plus 1. So, it will become n minus 1. So, it will also become n minus 1 d. So, all the terms, if we add, because here the n minus 2th term will be equal to n plus sorry, the yes, n minus 2th term will be equal to a plus n minus 3 into d. So, if we add these two terms, so it will become also 2a plus here n minus 3d plus 2d. So, it will become, if we take d common, so it will n minus 3 plus 2. So, within bracket it will also become n minus 1. Here if we come the second last term, so again a plus a 2a plus here 2d, here n minus 2d. So, if we taking d common, 2 will come, sorry, this is not 2d, this was a plus d. So, this is a plus d. So, if we are taking d common, so n minus 2 plus 1. So, it will also become n minus 1. Here it is a plus d because the first term is a, the second term is a plus d. So, by mistake I had written here a plus 2d, it is only a plus d. Again the last term will be, if we sum it, so it will become 2a plus n minus 1 d. So, you can see this will be equal to, these terms are n terms. So, n times it is coming. So, it will become n multiplied by 2a plus n minus 1 d. So, what will be Sn? The sum will be equal to, this 2 will come here, n divided by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. So, this is the formula for first sum of first n terms in the arithmetic progression sequence. You should remember this formula. You can also remember this is nothing but n by 2 and within bracket the first term is a and the last term nth term is a plus n minus d. So, a plus a n. So, if you remember that
A in the nth term is A plus n minus 1 d. So, you can remember this formula. Okay. So, let us solve few examples. The problem is that we have been given a sequence and we have to find out the sum of first 40 terms of this sequence. Okay. So, let us see this example. What is the sequence? 1 plus 4 plus 7 plus 10. 1, the sequence is 1, 4, 7. So, we have to find out 1 plus 4 plus 7 plus 10, 40 terms. So, n is equal to 40, A is equal to 1. What is the d common difference? Common difference is say 3, 4 minus 1 3, 7 minus 4 3. So, it is in AP. Now, very simple, you know the formula of summation. It is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. So, it will be equal to, the n is 40. So, 40 divided by 2 multiplied by 2a, a is 1. So, it will come 2 plus n minus 1, it means n is 40, 40 minus 1 into d is 3, d is 3, common difference. So, this will become 20 multiplied by 2 plus, if you solve the bracket, it will become 120 minus 3. So, it will be 2 minus 3 minus 1, 120 minus 1, 119. 20 into 119. So, you can write it down. 2380. Let us take another example. So, we have to find out the sum of 0.8 plus 0.81 plus 0.82,
101 terms. It means that n is equal to 101, a is equal to the first term is 0.8. What is the common difference? Common difference you can see it is 0.01. If you subtract 0.8 from 0.81, it will 0.01 again. From here it is obvious that it is 0.01. So, you can write the formula directly, is equal to n by 2. So, it will become 101 by 2 multiplied by 2a, 2 into 0.8 plus n minus 1, 101 minus 1 into d, 0.01. So, it will be equal to 101 by 2, 0.8 into 2, 1.6 plus 101, it will become 100, 100 into 0.01, it will become 1, is not it? 100 into 0.1, 20 and here 2 decimal places here. So, this will become 1. So, this will become into 2.6. So, now it is easy, you can do it. We will take one more example. Here we have to find out 3 plus 7 plus 11 till 79. So, it is not 79th term, the value of 79 this nth term is given as 79. So, here you have to find out n. You know here a is equal to 3, then difference, common difference d is equal to 4, 7 minus 3 4, 11 minus 7 4. So, this is 4, this is in AP. Now, we know that nth term is 79. So, from here we can find out n. 79 is equal to nth term, will the formula for nth term is equal to a plus n minus 1 into d. So, 3 plus n minus 1 into d is equal to 4. So, this will give 3 plus so n minus 1 into 4 will be equal to bring 3 this side to 79 minus 3 is equal to 76. So, n minus 1 will be, we will take 4 this side. So, this will become 76 divided by 4. So, I think it will cancel out 4 is 19. So, n
is equal to 19 plus 1 is equal to 20. So, here we have found out that it is the 20th term. Now, it is easy to write down the its sum. S n will be equal to n by 2, 20 by 2, then 2a, a is 3, 2a is 6 plus n minus 1 into d, n minus 1, n is 20. So, 20 minus 1 is equal to 19 into d is 4. So, this is sum. So, this will become 10, 6 plus 76. So, this will become 820. So, friends, you can see that the problems of arithmetic progression and sequence are quite simple, and it is only high school mathematics. You can solve it very easily, but it will be used in many of your courses. So, it is necessary that you should revise this chapter on arithmetic progression. Next time we will discuss on geometric progression. Thank you. It's our privilege and pleasure to have with us today Professor Harban Wasserman.